Two, one, one, two, three, seven, eight, eight, two, three, four, five, six, seven, eight, four, five, six. A library is not a luxury, but one of the necessities of life. Honorable heads, teachers, and my dear fellows, I am Isha Batul, And I am Riza Shujaa. and we are from grade 8 here. We are honored to host the first presentation of the Library Week. To start the presentation, I would like to invite Muhammad Umar from 6B to recite a few verses from the Holy Quran. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Now Sufyan from 6B is here to present the hadith of the day. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم ثبت لي سورة القرآن secure. For the quote of the day, I find here. The quote of the day is, life changes very quickly in a very positive way if you let it. Books are a uniquely portable magic. Now grade 6 students will come forward and tell us about the elements of a story. Good morning everyone. Today me and my friends will be explaining the elements a good story must contain to make it memorable. The authors include these elements to share these stories with readers in a meaningful way. Now I would like to call the elements of the story. Character. Hello, I am the people or animals in a story. A character may have ambitions, dreams, morals or desires that they wish to accomplish. Animals can also be taught to teach a moral lesson. Thank you. Setting. Of the story for the reader to imagine. The story can take places anywhere including fantasy locations. Plot. The sequence of interconnected events that make up a story. It is not essential for a story to follow events in a chronological order. Conflict. The central struggle or a problem in a story that a character must overcome. It can be an internal struggle or an external conflict that the character tries to resolve. Thank you. Climax. Climax, the highest point of tension and the turning point in the story in which the main conflict reaches its peak and gets resolved. Theme. The underlying message, central idea, or insight of the author is conveyed to the narrative. Thank you. Let's move forward and learn about some young and inspiring Pakistani writers who promote reading and creativity. For that, I would like to invite students of class 6 and 7. Shami, recognized at age 9 as a young poet and author, focusing on literature and Islamic teachings. Faizan Ahmed, a grade 7 student and author of the debut novel The Stolen Elegance. Rami, who had published 2 novels at a very young age of 13. A 14-year-old boy that has written a book on coding. A 10-year boy who published a storybook in Urdu. Aika Nawaz published many books and received international acclaim. Sidara, a distinguished poet and author who achieved first rank in poetry at an international level. Wahid, a 15-year-old girl, had her novel published on Amazon. Aisal Wahid, 11 years old, a creator author, has published 6 books on Amazon. Thank you. Maya Umar,
a 12-year-old author recognized for her literary contribution. As an investigative journalist famous for the sensational life and death of Kandil Balo. These young writers remind us that books help us shape our thoughts and values. Now we have a debate on book versus AI. मेज़बान फातिमा मोइन जमाल हश्तुम से आज का हमारा मौजू है किताबें बा मुकाबला मसनूई जहानत यानी AI। इसके लिए मैं अपने दोस्तों को दावत देना चाहती हूँ कि वो आएँ और अपने अपने दलाइल पेश करें। सबसे पहले मैं किताब साहिबा को दावत दूंगी, यानी AI को दावत दूंगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ किताब, आपकी पुरानी और सच्ची दोस्त। मैंने आपको हमेशा इल्म दिया, कहानियाँ सुनाई और आपका दिमाग तेज किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं भी आपकी मदद के लिए हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मैं फौरन समझा देता हूँ। मुझे बैटरी नहीं चाहिए और ना ही इंटरनेट। मैं हमेशा आपके पास रहती हूँ और मुझे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे सवाल पूछते ही मैं चंद सेकंड में जवाब देता हूँ। मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ, आवाज़ें भी सुनाता हूँ और बहुत ही आसान ज़बान में समझाता हूँ। मेरा ये फ़ायदा है कि मैं हमेशा एक जैसी रहती हूँ। मुझे पढ़ने का अपना मज़ा है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप तसव्वुर करते हैं, सोचते हैं और ये अमल आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। मैं वो मालूमात देता हूँ जो शायद किताबों में ना हो। मैं ऐसी चीज़ें भी सिखाता हूँ जैसे तस्वीर, आवाज़ और वीडियोस के साथ समझाना। मैं आपके सीखने के अमल को तेज़ और दिलचस्प बनाता हूँ। ठीक है भाई मसनूई जहानत, आप भले ही तेज होंगे लेकिन मैं गहरा इल्म देती हूँ। मुझे पढ़ने से बच्चों की सोच बढ़ती है। मेरी वजह से बच्चे जल्दी सीखते हैं और हर कोई मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत खूब, दोनों ही मुकर्ररीन ने अपने अपने हक में ज़बरदस्त दलाइल पेश करे। किताबें हमें सोचना समझना सिखाती हैं, जबकि मसनूई जहानत यानी AI हमें जल्दी से मालूमात फराहम करती हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि अगर हम किताबें और मसनूई जहानत दोनों का एक साथ मिलकर अच्छे से इस्तेमाल करें तो हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। शुक्रिया। We would like to end our presentation with a quote. Reading books really is one of the most profitable things in a person's life. I hope you like our presentation. Thank you. Have a wonderful day. Thank you very much. What a lovely start to the week. And now we are also I am very excited. I hope you all are also, that what next is coming up on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. Are you excited? Yes, so I would like to hear. Are you excited? Yes, that's it. Thank you once again, Ms. Nera. And we have शान